Shivaji. So Indian monsoon. Now, first of all, why we will go through the monsoon, or what reason that we have to study the monsoon? Because our climatic condition of India is highly, that is what depend on our monsoon. Monsoon shapes the climates of India, so that's one of the important reason that we have to go through the monsoon. Another fact is that 60% of our agricultural land that depends on rainfall. That is the monsoonal rain. Okay, monsoonal rains for the cultivation or for the agriculture. Then, as agriculture, okay, more than 50% of the peoples of India they engaged in agricultural sector. So that makes its significance or the importance that can be identified from this fact. So, and apart from that, we are having almost 1.2 billion 1.2 billion ପାଖରେ ଯଦି ଦେଖିବା population ଅଛି 1.18, it would be 1.18 or 2 like that. So I will go 1.2 billion. So huge population, the second most population, the most populous country in the world. तो एते प्रकार जदि हम देखिबा, and apart from that, the running of rivers, जो rivers सब देखिबा काली न्यूज आसला कि महानदी सुखा पड़ी जी है ना. many parts of Mahanadi that is dries, it's a dry bed पड़ी जी. महानदी रे जदि हम देखिबा dry bed, महानदी रे पानी नहीं, कारण हमरो maximum rivers होची seasonal rivers है ना. apart from Himalayan rivers, even Himalayan rivers रो जो water flow टा कमी जाई थे जोटा कि हमें कहबा ड्राई सीजन रे. that means we need, why? Because of agriculture. Monsoon, why we will go through the monsoon and what makes importance? Exactly, the agriculture. One point is agriculture. Now, as I said, labor force, more than 50% of the people engaged in this particular region. Our MSME sector largely depend on rainfall. Then rural economy, rural economy completely depend on rainfall. Then flowing of river, that is the longevity, or let's say the rivers water. Okay, the rivers, they also depend, particularly outside the peninsular rivers. This part of your rivers, they depend on monsoon because they are the seasonal rivers. They catch the water and they flow during the monsoon time. ये भी हमको देखा जीवो. So these are the important points with the देखा, and है ना, that makes the Indian monsoon one of the most important facts. So आपको छाड़ी के में जाई परिवा नहीं. You have to go through the monsoon of India. Plus natural vegetation also. If we are having the natural vegetation distribution, जदि हम देखा, let's say the Western Ghat, northeastern region, and Andaman Nicobar, they are having evergreen forest. So that is also because of the monsoon. Say भी monsoon जोगु soil, that is also monsoon. That means natural, I'd say forest कथा नहीं जो, soil कथा नहीं जो, climate कथा नहीं जो. जब देखिए बे देखो बहुत temperature देखो जून जुलाई बहुत खराब है, बहुत गर्म है. Suddenly when monsoon comes, that heat will reduce. So as monsoon onset, the onset of monsoon will reduce the temperature as well over the surface of the India, particularly in the Indian subcontinents. So बहुत सारा जो हम देखो numbers of benefits is there. So monsoon also one of the जहाँ को हम कहवा dynamic mechanism अच्छी monsoon रो सेमती किसी static mechanism नहीं, जोड़ के climatologist माने still they are studying what exactly the reason for the onset of the monsoon, or the reason for the formation of the monsoon. So these are what I would say points are lies over there. Many facts, many concepts, we have to go through that. So let's say we will go through the monsoon right now. The monsoon ये थला तुमको important जदि तुमको पचारे कि anyone question एमती आसी परबो, what is the significance of monsoon? The question जेतला आसी significance of monsoon, that time you have to write कि more than 60% of the land agriculture depend on agriculture, 50% of labor force, MSME sector, rivers, lakes, that means ecosystem, forest,
Okay, then climate. These are the points that you can remember and you can write. Okay, these are the important points. That means it has significance. Otherwise, monsoon रो किसी दरकार पड़ न था है ना. So that is why this makes this the point that makes how much importance we are having or how much dependence we are having on the monsoon. ना ये थला monsoon रो significance कहले तुम्हें एटा को ही लेखिया रखी points गुड़ा को है ना बुझा पड़िबनी. एंड आमर जो फूड ग्रेन हाँ जोटा पॉपुलेशन कथा कही लेट्स से 140 कोटी दैट मीन्स 1 पॉइंट केते आमर 18% टोटल ग्लोब रो 18% सरी मु भूल कही आमर 1.4 बिलियन सॉरी मैंने भूल डेटा दे दी मु एटा 1.4 बिलियन सॉरी कई किसी भी कहलनी almost 20% of the world population, almost 20% of the world population, percentage wise 20 and जदि आम नंबर वाइज देखा 1.4 बिलियन एति लोक को हमको खाया को दवा पड़ो आ इंडिया रे मैक्सिमम क्रॉप्स होची खरीफ ये भी हमें पढ़ीचे तेणु करिकी वी नीड टू फीड upon the people and feed on the people of India and such a huge people. Apart from that, maximum crops grown in India they are the kharif crops. एक्वाकल्चर नहीं जाओ ये सब मतलब बेनिफिट पाउछ मॉनसून तेणु मॉनसून टा हवा बहुत जरूरी. हाँ कि नहीं बुझा पड़ो ना समस्त को. तो ये थला सिग्निफिकेंस रे आपको लिखि परिबा ना मॉनसून. मॉनसून होचे गोटे सीजनल विंड. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनसून होचे सीजनल विंड. ये लिखा है ना मॉनसून इज व्हाट सीजनल विंड ना. सीजनल विंड कौन सीजनल विंड मीन्स सीजन आसिले आसीबो नहले नाही. जेमते कि फॉर एग्जांपल देखिबा लेट्स से रेनी सीजन आम कहे तो विंड रो रिवर्सल हुए जेमते कि ये रहा आमर मैप है ना. विंटर आमर विंड रो डायरेक्शन कुआडे थाए नॉर्थ टू साउथ को थाए. विंटर द विंड डायरेक्शन वुड बी नॉर्थ टू साउथ. But when it comes to the summer season, the wind direction changes and it will be from the south to north. It would be south to north like this. Okay, the wind direction changes as the season changes. As the season changes, the wind direction also changes. That is why monsoon could be a seasonal wind. Okay, monsoon is a seasonal wind. That wind will have a lot of moisture that will cause the rainfall over the surface. Okay. सो मॉनसून होची ताले गोटे रिवर्सल विंड जोटा कि सीजनल विंड सीजन अनुसार से चेंज होची है ना. आ कोन दैट मींस सीजन अनुसार जेमते विंटर रे आमे देखिबा विंटर रे विंटर मॉनसून होची जाको हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहूचे. समर रे साउथ वेस्ट मॉनसून होची. सो सीजनल विंड चेंज करियो सीजन अनुसार विंड चेंज करे and that wind will have lots of moisture. That moisture will cause rainfall over the subcontinent. Okay, fine everyone. है ना. ये रहा तुमरो कि मॉनसून जोटा कहली सीजनल विंड कथा सीजनल रिवर्सल विंड बोलिया को कहा जाए and that wind will have moisture. That moisture causes the rainfall. Okay, anyone what the monsoonal rainfall is termed as what kind of rainfall, whether this is like convectional rainfall, like cyclonic rainfall, anyone else what kind of rainfall the rain associated with this particular wind, what kind of Orographic. it would be orographic. Orographic means the wind will come and it will collide with the surface barrier like the mountain hill plateau, then it will move off. That will lead to the formation of cloud. तापर rain हबो ताको कहो orographic. That wind रो meaning कोन horizontal movement जेतलो करे air टा ताको हम कहो wind. अब vertical movement हेले ताको कहो air. Vertical movement को हम experience करि परिवानी. Air को rarely you can experience the air. So largely we experience what wind. The wind होची horizontal movement. Now wind जेतरो horizontal move करूची suppose जेमते गोटे mountain आसेगला तो mountain रे it will strike and then it will move off. As it move off that will lead to the formation of cloud. तो एई भले rainfall को कहा जाय
orographic rainfall. Now बुझा पड़िबोनी. Again I repeat, let's say it's mountain like that, the wind is coming, here it will collide, it would be objected or a strike करिबो, एटी strike कला परे the wind will move off, cloud formation करिबो, कारण ऊपर को गले टेम्परेचर कमिबो, टेम्परेचर कमिले कोन हेजिबो, एडिवेटिकली एक्सपांड हेजिबो, तादर से क्लाउड फॉर्मेशन करिबो, क्लाउड फॉर्मेशन कले रेन हबो, तापरे रेन हबो. सो ई भलिया रेन को कुआ जे ओरोग्राफिक रेन. कन्वेक्शनल रेन कले टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, जेमती एबे खरा सीजन चलची, लेट्स से ए टाइम रे जो रेनफॉल होची, दीज आर द कन्वेक्शनल रेनफॉल. कारण सरफेस बहुत ही ज्यादा हीट है, जो सरफेस जो बहुत ज्यादा हीट है, जो मॉइस्चर टाइप इवेपोरेट हैला परे, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रेन, एंड दैट टू बी द इन द व्हाट इवनिंग टाइम, है ना, सेटा रहिबो हमर जो कन्वेक्शनल रेन. और साइक्लोनिक रेन कले दैट मींस व्हेनेवर देयर वुड बी ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन, ईदर ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन, दैट विल लीड टू द साइक्लोनिक रेनफॉल. जाबियो. So Monsoon, देखा, the word monsoon has been derived from the Arabic word Monsoon. Arabic word Monsoon ru derived करा जाइछि. Okay, जहार जो that means Arabic word, तुमको Arabic word रू कहीं की derive करा गला, because in the ancient time the Arabian traders they were very aware of the Indian Ocean, they were very aware of the route of the Indian Ocean. In the medieval time, in the ancient time, since the ancient time, Arabian trader माने dominant करके रखी चंती Indian Ocean को, ये part, this part of Indian Ocean, particularly the Arabian Sea. It's now the time has changed. Now India is dominating in this part of the world. This part पूरा India dominate करके रखी छी. तो जदि अब देखबा तो आरब सेलर माने से माने जेतबेले सबले सेल करूथले इंडियन ओशन रे, they experienced that time that the reversal of wind, the change in the wind pattern that causing the rain, that also leading to the change in the rain pattern. Okay, so सेति पे हमें आउ से माने तारो ना देथिले Monsoon बा जहा को हम कहचे reversal of wind. The Malayan word monsoon meaning season. As the season changes, the rainfall pattern also changes, the wind direction also changes. There is double monsoon system in India. We are having like winter monsoon and the summer monsoon. Everybody aware of this fact that we are having two kind of monsoon system. That is the summer monsoon and winter monsoon, isn't it? Hope many of you have, है ना, कारण शीत दिन पे monsoon हुए. Which region of India experience the winter rainfall? Anyone? Tamil Nadu. Tamil Nadu. Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. এই বছর জানিছ আন্ধ্র প্রদেশের অক্টোবর মাসের ভয়ঙ্কর ফ্লড হয়েছিল. That is because of that monsoon. है ना, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश फ्लड ही नथिला ई वर्ष 2021 रो जदि हम देखिबा ए जो मानसून ता हमर गला, से मानसून रे बहुत सारा दैट मींस हम कहबा 2021 विंटर तुम देखि दे अक्टोबर नवंबर फ्लड ही छै, केमति स्पेशली अक्टोबर मास रे हम देखिबा बहुत फ्लड ही छै आंध्र प्रदेश रे. So that is of the winter monsoon. Now monsoon, so that means two parts of India, two monsoonal system is there. One would be summer, one would be winter. जहाँ भी हो बर्तमान जो रेनफॉल होची तमे देखुछ ए जो आसीबो काल बैसाखी आसीबो, एमान को कहा जाय लोकल स्टॉर्म, है ना, ए डेली हबो तमरो, ए डेली हबो ठीक केते बेले हबो ना दिन 2टा परे 3टा 4टा बेल को 4टा रु 7टा भितर रेनफॉल हबो. जो हमरो वर्षा दिन जो खरा दिन होची जो एबे जो ये 4टा रु 7टा मेघ उठिबो वर्षा हबो, है ना, कारण लैंड बहुत हीट होता है 40 डिग्री 45 डिग्री 43 डिग्री से टाइम रे हबो ही हबो रेनफॉल. बुझि परछ ना, कन्वेक्शनल रेनफॉल आको कहा जे कन्वेक्शनल रेनफॉल. एथरे गास्टी विंड भी आसी पारे, काल बैसाखी टाइम आसी जाउ आसी गलानी, काल बैसाखी रो चलिबो मासे पूरा, ये मन को कहा जे प्री मॉनसूनल रेनफॉल भी कहा जे. तब the monsoon are experienced in the tropical region roughly 20 to 20 degree north and south, but it are roughly दियाइछि, but India रे किछि something India scenario किछि अलगा.
we are in India, that is the monsoon experience up to 25 to 30 degree like this, because Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, all they also experience the monsoon. That means India's jo amro location is something unique, and Himalaya, presence of Himalaya makes itself a unique landform, है ना। तेणु करके एटा लिखा है हमर रफली दैट डज नॉट मीन्स 20 डिग्री जाए मानसून हबो ता ऊपर को हबो नहीं, सेमते किछि नहीं, ता ऊपर को मानसून हबो। एटा डिपेंड करे सेठी हमर टोपोग्राफी कोन अछि। नाउ मानसून को हम देखबा मेनी स्कॉलर्स बा सम स्कॉलर्स tend to treat the monsoon wind as the land and sea breeze। किछि लोक कहंती monsoon is just the कोन कहलो गोटे हमर लैंड ब्रिज बा सी ब्रिज रो गोटे लार्जर फॉर्म हमें ताको कहि देबा। अच्छा लैंड ब्रिज सी ब्रिज समस्त जना अच्छी ना पढ़ाई देवी ताकू भी बिल्कुल पढ़ाई देवी है ना जी, जहाँ कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़ाई देवी ना। मानसून कोठी देखा जाए ना दी प्रकार मानसून अच्छी, गोटे थाए सुडो मानसून आ गोटे थाए मानसून। ध्यान से मन रखिबो, गोटे थाए सुडो मानसून आ गोटे मानसून। सुडो मानसून तुम को पचारिबो नाही, जो सुडो मानसून टा पचारिबो नाही, कारण एटा ऑप्शनल रे, एटा एक्सक्लूसिवली ऑप्शनल रे पढ़ा जाए। और ऑप्शनल रे भी ओपीएससी तो पचारिबोनी, मु जानि छि एटा यूपीएससी केवल पचारे सुडो मानसून, बाकी तुमको पचारिबो नाही जाबी हो। मानसून कोठी कोठी होय वर्ल्ड रे जदी देखबे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, पार्ट ऑफ सेंट्रल वेस्टर्न पैसिफिक। वर्ल्ड मैप मते देखिया पड़िबो, मु देखु छि वर्ल्ड मैप कोठी थिबो जदी। लेट्स से मानसून कोठी होछि देखो इन दिस पार्ट ऑफ ये पूरा साउथ ईस्ट, एटा रहला हमर ईस्ट। एठी मु देखि दोछि तुमको कोठी कोठी मानसून हुए, जस्ट मु खाली लिखि दोछि और तुम जदी मैप तुम पर थिबो टिके लिख देबो। दैट मींस एटा होछि हमर साउथ ईस्ट, एटाला साउथ ईस्ट एशिया आ गोटे रहबो हमर ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया, साउथ एशिया पूरा कंप्लीटली डिपेंड ऑन मानसूनल रेनफॉल। मानसून आउ कोठी हुए दिस पार्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। मानसून कोठी हुए also western part of Africa, western part, let's say ये होची अफ्रीका रे मैप भाबो। तो वेस्टर्न पार्ट एथि भी हम मानसून देखा जाए वेस्टर्न पार्ट रे। ए जो वेस्टर्न पार्ट जो मानसून देखा जाए आको कहा जाए सूडो मानसून, बिकॉज इट्स टाइप, इट्स लाइक सूडो रो मीनिंग कोन, इट्स लाइक, दैट डज नॉट मीन इट वुड बी कंप्लीटली यूनिक। जेमती मानसून ए रीजन रे जेमती देखा जाए हमरो साउथ ईस्ट एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एमती प्योर मानसून देखा जाए इट वुड बी लाइक मानसूनल विंडफॉल। तेणु आको कहा जाए सूडो, बुझी परिबो। सूडो कहबार मीनिंग होची इट वुड बी लाइक मानसून, दैट डज नॉट मीन इट्स आल्सो अनदर मानसून ना, बुझ पछो। तो दिस पार्ट ऑफ एठी मानसून देखा जाए। इवन यू आर हैविंग ऑस्ट्रेलिया मैप जदी तुम माने जानतो, ऑस्ट्रेलिया रो ए जो नॉर्दर्न पार्ट रे मानसून हुए, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आल्सो एक्सपीरियंस द मानसून। दैट मींस ऑस्ट्रेलिया रे मानसून आसीबो, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, particularly Madagascar and all this region they experience also। वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, वेस्ट अफ्रीका बास लिखिबो। आउ कोठी देखा जाए ता तमरो कैरिबियन सी जोटा हमरो गल्फ ऑफ मैक्सिको अछि, गल्फ ऑफ मैक्सिको ऑल अराउंड गल्फ ऑफ मैक्सिको, दैट मींस यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, ऑल दैट रीजन आल्सो। सो दीज आर द रीजन वेयर मानसून हैपेंस। ओके, तो मानसून हमको सही पर्टिकुलर रीजन रे देखा जाए। सेमान को द जो हमरो वेस्टर्न अफ्रीका रे जोटा देखा जाए सेमान को सूडो को जाए, बिकॉज़ दे आर नॉट प्योर मानसून लाइक इंडिया। ना भी तुम्हें देखी तो वो काली भी पेपर आसला, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये होची हॉर्न ऑफ अफ्रीका। नाउ द सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज गोइंग ऑन इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड। कहीं जानचो मोर देन 80 मिलियन पीपल्स, more than kete 80 million people they are starving out of food in this particular region, Somalia, Ethiopia, okay, these countries they are reeling under the food crisis। कौन पई ना एमान को पाखरे खाइबा को नहीं, एथि पई मानसून होनी एठी लास्ट 2 इयर्स एकला एठी मानसूनल रेनफॉल होनी। तो बिकॉज आज द मानसून इज नॉट हैपनिंग, एबे एटा तांकर वर्षा टाइम टा, ए सीजन टा, रेनफॉल टाइम, एबे भी वर्षा होनी। तो ड्राई कंडीशन बहुत चलची, सीवियर ड्राई कंडीशन, पीपल्स आर suffering of drinking water, people cattles are also not getting water for their drinkable purposes of their sustaining life। इवन माइग्रेशन बहुत ही ज्यादा देखा जाउची। ऑन द टॉप ऑफ दैट वार कंडीशन सेठी, मतलब सिविलियन और गवर्नमेंट भितर सब बळे जोटा हम कहउ जे कोन
वार चलते है ना। तो यही भाई कंडीशन रे वार चली है ना, प्लस मॉनसून होनी, ड्रॉट सीजन खाइक पड़ना, तो ये खाली पेपर आसला 80 मिलियन पीपल्स दे आर स्टार्विंग आउट। और ये लोक मैंने कौटू फूड आणुले आगुरी, दे आर गेटिंग फूड फ्रॉम यूक्रेन, व्हीट आणुले यूक्रेन रु, एंड एबे जांच यूक्रेन रशिया दे आर आल्सो एंगेज इन फाइट। तेणुक इंडिया एमान को एबे खाइबा दौरान जहाँ जी इंडिया, सो इंडिया बर्तमान माने कहवा कि दुनियार अन्नदाता पलटि जाइए। इंडिया इज गिविंग टू श्रीलंका, इंडिया इज गिविंग टू दिस पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो गिविंग टू दिस पार्ट, इंडिया ऑल्सो गिविंग टू दिस पार्ट, पूरा वर्ल्ड को इंडिया भी जोगाऊ खाइबा, बुझीपार नहीं। तो दिन थिला इंडिया यूज टू बेक विथ सम डेवलप कंट्रीज, बर्तमान आउ नाइ सिनारियो, दैट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन रो इम्पैक्ट जहाँ भी हो। तो है ना, मॉनसून कोटी कोटी हुए मुझे तुमको वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट रे कहीदेली। दे आर प्रोनाउंस्ड, जदि हम देखा प्रोनाउंस को ले तो मॉनसून इंडियन मॉनसून हमारे जो इंडियन मॉनसून को कहा जाए मोस्ट प्रोनाउंस्ड मॉनसून, दैट मीन्स वेल डेवलप्ड। व्हेन आई से प्रोनाउंस्ड, that means well developed monsoon happens in the Indian subcontinent. Though other parts of the world, like I say, Australia also receives the monsoon rainfall, Madagascar also receives the monsoon rainfall, western part, Mexico region, they also though they receive monsoon rainfall, the monsoon happen over that part of the world as well, but they are not so much of pronounced, that much of not pronounced like the Indian monsoon. Indian monsoon is the best monsoon in the world. कहीं कहलो the intensity of the rainfall, the periodicity of the rainfall, or I would say the longevity of that, this is unique. जदि तुमको कहा Indian monsoon कहीं की, why this is most pronounced or more pronounced as compared to the other, ये लिखा है ना Indian, that means हम देखा they are more pronounced in the Indian subcontinent compared to the other region of the world. Why pronounced? That means को basis रे हमें कोचे कि Indian monsoon is more, I would say more pronounced as compared to, because of the longevity, because of the let's say the duration. That means हमारा जो duration टा था monsoon रो, it would be let's say 3 to 4 months. Okay, fine. तो यार duration टा अधिक, बाकी region रे जो monsoon होती that would be 1 month, 1.5 months like this. And the intensity, either you may say the intensity or the total rainfall, both. Intensity of the rainfall also high here in this particular part of India or the world. Also the total rainfall also high in this part of the world. So Indian monsoon hochi unique, बुझिपारछन, Indian monsoon unique, they are most pronounced because of this fact. Our duration, our longevity, our total rainfall, our intensity of rainfall, this is when it compares to the other part of the world, they experience very less rainfall. से इंडियन मॉनसून को समस्ते स्टडी करती ऑल अराउंड द वर्ल्ड रो जते मेट्रोलॉजिस्ट माने अछंती, दे आर फोकस ऑलवेज ओवर द इंडियन मॉनसून टू नो व्हाट एग्जैक्टली द मेकानिज्म behind the Indian monsoon and what is causing that Indian monsoon to be so much unique, कहीं कहते unique Indian monsoon तेणु करिकी हमें देखा जाए. सो दैट इज हमें पीरियडिक विंड और सेकेंडरी विंड्स. अच्छा ये सेकेंडरी विंड्स जदि कहीं न बुझी पार मु कही दिए सेकेंडरी विंड्स कौन आमर जो सेकेंडरी विंड्स कौन मत ड्र करा पड़ो टे बुझीपार. अच्छा किए बुझीपार कहीदे सेकेंडरी विंड जब मुझे ड्र न करी खाली कहीदे आम जिते आम ट्रेड विंड्स अच्छी जदि आम ग्लोबल विंड्स को छाड़देवा जमी आम वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज ट्रेड विंड को छाड़ दियो जहाँ रहा वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज को छाड़ दियो आउ जहाँ विंड रहा जमी मॉनसून सिंपल मॉनसून गोटे सेकेंडरी विंड बास ये मन रख. बाकी कारण पढ़ाई गले पुणी मत वर्ल्ड मैप ड्र करा पड़ो है ठीक अच्छे ये गोटे छोटे ड्र कर फटाफट देखी दूसरी मुझे है ना. देखो हमारा विंड पैटर्न केमती थाए इट वुड बी लाइक दिस. विंड पैटर्न जब तुम पाखे एनसीईआरटी केबे कहीं पढ़ी थो है ना 11th क्लास एनसीईआरटी बहुत बढ़िया दिखाई से है ना. तो यहाँ आम देखिपर दीज आर द ट्रेड विंड्स. आपको कौन कहे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आपको कौन कहे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड एति तो जानी थो कि है ना. आउ एपटू जाऊँ वेस्टर्लीज कहले वेस्ट टू ईस्ट को जीव आउर आसूँ ईस्टर्लीज है ना. तो दीज आर व्हाट दीज आर द ग्लोबल विंड्स. गोटे है ग्लोबल विंड्स एम को कहुए ग्लोबल विंड्स कौन पे बिकज दैट विंड्स सर्कमफरेन्सिंग द होल अर्थ आउ कन्स्टांटली से डायरेक्शन सब बेले मेंटेन करुँच. गोटे थाए ग्लोबल विंड्स
गोटे थाए सीजनल विंड्स बा जहाँ को आम कहू सेकेंडरी विंड्स आ गोटे थाए टर्शियरी विंड तीन प्रकार विंड थाए गोटे हूँ ग्लोबल विंड्स कहले जो विंड वर्ष सारा सेम डायरेक्शन रे थ्रू आउट द वर्ल्ड को कवर कर ग्लोबल विंड्स लाइक एज आई सेड दिस वन इज अ ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड this one is southeast trade winds, so they will circumference the earth and their direction but I would say don't change, they don't change their direction throughout the year, they will move in a certain part like this one. Teman ko kuaje kono same both hemisphere we will also have in the southern hemisphere same wind pattern. Okay, एपटे भी सेमती देखा जो तो आपको कहे विंड पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड ना ये विंड पैटर्न रे जति भी विंड आम देखुचे दे आर द ग्लोबल विंड्स एमन को कहे ग्लोबल विंड्स ना सीजनल विंड्स जोटा आसे सेमन को कहे सेकेंडरी विंड जेमती मॉनसून एटा कोन सीजन सहित विंड आसुची तेणु आपको कहे सेकेंडरी विंड तुमको टर्शियरी विंड कोन लैंड ब्रीज सी ब्रीज माउंटेन रो जो विंड देखा जाए जेमती काटाबाटिक आनाबाटिक हे गेला लू हे गेला लेट्स से लू आम कहे लू कोठी देखा जाउची राजस्थान पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी एवं खरा दिन आसला लू देखा लू इज व्हाट लोकल विंड एटा कौन गोटे लोकल विंड तो लोकल विंड को आम टर्शियरी विंड कहू दे एसोसिएटेड विथ द सीजन यार लंजिविटी बहुत कम थाए गोटे 2 मास आसो खत्म हो लू सो लू हूँ गोटे लोकल विंड गोटे लोकल विंड गोटे सीजनल विंड गोटे ग्लोबल विंड नाउ जो आमर लोकल जो आमर सेकेंडरी विंड दैट मीन्स मॉनसूनल विंड हूँ गोटे सेकेंडरी विंड एटा मन रख प्राइमरी विंड कहबनी आपको ये सेकेंडरी आउ जो लोकल विंड गुड़ा जमती मुझे कहली लू हो गला सपोज आम कह काल बैसाखी दैट आर टर्शियरी एमने होचंती टर्शियरी ना मन रही हो समस्त होप है ना तेणु सेकेंडरी विंड मन रख मॉनसून हूँ सेकेंडरी ना मॉनसून डायरेक्शन समस्त जान साउथ वेस्ट रु आसे मतलब मुझे कहूँ समर मॉनसून कथा कहूँ विंटर मॉनसून कथा मुझे कहूनी विंटर मॉनसून विल ऑब्वियसली इट विल कम्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना ताले आमर 2 प्रकार अच्छी मॉनसून है ना गोटे विंटर गोटे समर मॉनसून इज मोस्ट प्रोनाउंस और मोर प्रोनाउंस एज ए कंपेयर टू द नॉर्थ दैट इज द विंटर मॉनसून इफ आई कंपेयर बोथ that means our southeast monsoon is going to be strong monsoon and is more pronounced, well developed. Reason could be different reasons. See, reason could be different. We will go through reason. At least I have to take 3 classes to cover the monsoon. 3टा क्लास तो लगे monsoon cover करने पे भल से पढ़ाई देवी don't worry. जोटी न बुझी परिबो live class तो इतने नहीं होचे ना so that you can ask me directly. ना साउथ वेस्ट मॉनसून हम देखिबा जदि साउथ वेस्ट monsoon होची कहा जाए there is also what Tibetan plateau also responsible for the formation of that means the role also one of the most significant role is being played by the Tibetan plateau for the formation of the monsoonal role. It's now recently finding is recently coming out by the it's like it's been 15 years and 20 years that the role of Tibetan plateau is been recognized. Otherwise before that nobody had any idea about the role of Tibetan plateau, how Tibetan plateau is playing role for the formation of the monsoon. So it's a recent topic that role of Tibetan plateau is now in the top of the town. जब ये जो तो टाइबेट एंड साइबेरियन प्लेटू रो रोल भी कहा जाए इंडियन मॉनसून रे है ना हमर जो साउथ वेस्ट कोस्ट होची साउथ ईस्टर्न कोस्ट होची इंडिया आउ एथरे भी रेन हुए दैट मीन्स हमर पूरा पेनिनसुला रे रेनफॉल हुए इंडिया इंडोनेशिया बांग्लादेश म्यांमार चाइना जापान मु सेत में आगु कहि देछि ईस्ट एशिया साउथ एशिया तीन जगह मॉनसून हमर सेम टाइम रे हुए सेथि में ये देखो जेहेतु मॉनसून होची ताले मॉनसून रे रेनफॉल अधिक हुए दैट इज व्हाई राइस आराम से ही परिबो कना राइस में अधिक वाटर दरकार सुगर केन है ना तणु करके हमर एमति थाए ना फैक्टर रेस्पोंसिबल फॉर द very strong development of monsoon. Now Indian monsoon होची जाको हम आउट के पूर्व बतले कि more pronounced monsoon, more strong monsoon. कि why? Because of the vast size of the Indian subcontinent and adjacent sea. ये बहुत important. जदि तुमको एमती क्वेश्चन के भी पचारि पारंती एमती little bit of difficult. I don't say कि this is difficult topic. ये difficult no little bit of. Only we need to have concept clarity so that you can write these questions. This is not like that. Okay, thunder from the blue. It's not like that. Was आमर साइज बड़ अच्छे इंडियन सबकंटिनेंट रो प्लस टॉपोग्राफी को हमें छाड़ी परिबा नहीं. जस्ट इमेजिन करो had it not been like mountains. Just imagine करो if Eastern Ghat
Western Ghat, if they were not there, what could happen? It could have been less rainfall over the Indian subcontinent, because that obstruction they are providing right now, that would not be there. ସେଟା ହେଇନଥାନ୍ତା. So because of the presence of Western Ghat and the Eastern Ghat, they are obstructing the monsoonal wind. They are, because of their obstruction, so that will cause, or that is causing the more rainfall. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ବି ପଢ଼େଇଥିଲି କି ଯୋଉଠି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଧିକ ରହିବ ସେଠି ଅଧିକ rainfall ହେବ, because the horizontal move କରୁଛି wind ଟା, ତାକୁ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ, as the mountain height is increases, more the height, more the rainfall will happen. That is why north eastern region ରେ ତମେ ଦେଖ ଅଧିକ rainfall ହେଉଛି, जोटा आम पूर्वांचल रीजन कहे. Another reason जदि मु पचारिबि कि why northeastern region of India experience more rainfall, because of the proximity to the Bay of Bengal, and that Bay of Bengal also putting what huge amount of moisture to that particular region. Okay, nahi koi paribani ame. Obviously we can add that because of this northeast region, Bay of Bengal जेहेतु पाखरे अछि, सेथिपय हमको moisture मिलिबो, and tall mountains are here, tall mountains are there in this region. Obstruction provide करूची, तादरा rainfall होची. Western Ghat देखो केरला रे अधिक rainfall होची. Why? Because of the tall mountain. Western Ghat so highest भी कोठी अछि, केरला रे अछि, केरला Tamil Nadu border. So that is why तेणु करके हम कहबा Indian subcontinent adjacent sea. ये sea कौन point? Why sea is responsible for the more rainfall? Because of the moisture. ये कौन करूची हमको moisture provide करूची. That is why that is the region. Very high and intensive mountain system अछि, जोड़ा को आउट टिके पूर्व कहतील topography, that plays very important role, or the formidable physical barrier between the tropical and the polar air mass. तेणु आम कह ये जो आमर लैंडफॉर्म अच्छी ना, लैंडफॉर्म लेट से द ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कि आम आरावली कथा नहीं जा, विंध्या कथा नहीं जा, ये माउंटेन को से कंजर्व करवा दरकार. वी नीड द कंजर्वेशन ऑफ दिस माउंटेन आल्सो, बिकॉज दे आर प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल. ओके, फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल ऑफ ओवर द इंडियन पार्ट. तेणुक ये माउंटेन न रही रिवर सब खत्म हो, बिकज रेनफॉल कमिज और रिवर सब खत्म हो, एग्रेसिलिटेशन बढ़ी. सो वी नीड टू कंजर्व दिस माउंटेन एज वेल, सो दैट आमर कौन रेनफॉलटा जमती हो मेंटेन रहिबो. नेचुरल वेजिटेशन आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द causing more rainfall over the Indian subcontinent, कारण से मैंने भी moisture through that transpiration, जोटा आम कहे ट्रांसफर एवापोरेशन. जो ट्रांसफर एवापोरेशन द्वारा कौन हो, जो मॉइस्चर गुड़ा प्लांट छाड़ुची, जो मॉइस्चर आसूची एटमॉस्फेयर को, दैट मॉइस्चर आल्सो कॉज द रेन. तेणु करके कहुए गछ लगे रेनफॉल हम. हाँ कि नहीं, बुझा पड़ो समस्त को ना, कौन कौच बुझा पड़ुचे ना ये पॉइंट जो दीटा आम डिस्कस करुचे एवरीवन ना, बुझा पड़ो. Yes, sir. Yes. तेणु वी नीड टू कंजर्व. तेणु मॉनसून, इंडियन मॉनसून आमर जो क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी, द इंडियन क्लाइमेट इज सो फ्रेजाइल दैट वी नीड टू कंजर्व इट. आमको से एक्चुअली ये सब टॉपिक स्कूल लेवल रे भी पिला को पढ़ाया दरकार, सो दैट दे विल हैव अवेयरनेस के हाउ द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन मॉनसून जाना पड़िबा, एंड सो दैट वी नीड टू कंजर्व आवर नेचर. और नेचर को कंजर्वेशन करिया पड़िबो, अदरवाइज रेनफॉल कमी जिवो, मॉनसूनल पैटर्न चेंज हो जिवो, एंड दैट विल कॉज ए ह्यूज डिस्ट्रक्शन टू द Indian economy पूरा खत्म कर दो हमारो. जब origin of monsoon is not fully understood. Now we will only go through the as of now जहाँ भी हम पाखे information अच्छी कि how monsoon is forming है ना, जोटा भी theories जहाँ जहाँ देई चंती climatologist माने ताकू हमें पढ़िबा. बट पूरा कहीं भी 100% पूरा जेते भी theory अच्छी आज जाए, none of them are 100% correct. कोटा भी 100% करेक्ट नो, ओनली देयर प्रोबेबिलिटी इज मोर. कहार प्रोबेबिलिटी अधिक कहार कम, जहाँ भी एबे भी स्टडी चलची. डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड दे कम एवरी ईयर टू द इंडियन ओशन, दे आर हैविंग एक्सपेडिशन इन द इंडियन ओशन. इवन इंडिया आमर जो इंडियन अच्छी नेवी है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड, वर्ष सारा से रिसर्च टीम भी अच्छी रिसर्च करूछंती कि कौन व्हाट एक्जाक्टली द कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉनसून. सेटा हमें जानी गले हमें मॉनसून को हमें ठीक अच्छे हमें जानले कि दिस इज द सर्टन कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉनसून, सो दैट से कॉज टाकू हमें हार्म न करवा, सेटा जना ही पड़ोनी. तो सेवरल थ्योरीज अच्छी, गोटे पर हमें गोटे देखा है ना. मॉनसून फॉर्मेशन रो फर्स्ट थ्योरी एंड द क्लासिकल थ्योरी कह जाए सर एडमंड हार्ले थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी को कह जाए ना. क्लासिकल थ्योरी पढ़िया पूर्व जस्ट मुझे फिगर टे बुझापी चेष्टा करी ना. हाउ रिवर्सल ऑफ विंड केमती हुए, लेट्स से
दैट मीन्स आम ये गोटे जिन चेष्टा जाना चेष्टा करवा लेट्स से ए हूँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जोटा कि ये दिखाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट मीन्स आम कौन करवा जो ये जो समर टाइम आसूँ समर टाइम कौन हो लैंड उपर टेम्परेचर लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस एमती हो बाय दैट टाइम वाटर टेम्परेचर केते रहबो वाटर लेट्स से वाटर विल हैव 25 डिग्री सेल्सियस है ना वाटर तो एमती नहीं कि वाटर भी 40 डिग्री हो वाटर तो हेनी कौन पे ना वाटर स्पेसिफिक हीट होची हाई बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट ये जल्दी गरम हेनी कि जल्दी ठंडा हेनी इट विल ग्रेजुअली वार्म अप एंड ग्रेजुअल कूल डाउन कार वाटर now water temperature rahila let's say 25 degree celsius and the land temperature 40 degree 20 35 degree like this okay more than 30 that means 35 hochi summer re bahut temperature hochi land re so the temperature difference asijibo that means land will have more temperature water will have less temperature as a result the low pressure will develop over what low pressure will develop over the continent that means eti kon hojibo low pressure develop hojo more the temperature low the pressure inverse relation more the temperature or high the temperature low the pressure pressure सबले कोन रहइबो ना कम रहइबो जदि टेम्परेचर बढ़िबो टेम्परेचर बढ़िले प्रेशर कम हुए इनवर्स रिलेशन as here temperature is less comparatively less as compared to the land को जतरा में कंपेयर करबा that means it would be high pressure the pressure would be high comparative geography always what comparative studies ये होची comparative study सब बड़े comparative study करा जाए है ना तो यार let's say 40 degree हमें नहीं गले here would be the 25 degree that means comparatively land is more warm up land will have low pressure and the water will have by the meantime water would be as the less temperature कम कहले high pressure that means आउ सबले wind कोन करे high pressure रु low pressure को move करे high pressure रु low pressure को move करे एटा समस्त को बुझा पड़ो छे everyone है ना so wind will always move from high pressure to low pressure wind सबले move करिवो so that what the air is coming from this ocean part or this water part they will have moisture okay na moisture होइबनी moisture होइबो as a moisture टा ऊपर को आसिला परे कोन करिवो rain cause करिवो that will cause rain over the surface तो आकु कहा जे that means ए जो water आमे कहबा जो wind टा आसुची wind is coming from water to land आकु कहा जे sea breeze आकु कोन कहा जे sea breeze है ना आकु कोन कहबा में sea breeze उल्टा हे जाय विंटर रे तारो ठीक उल्टा हे जिवो कोन हे जिवो विंटर रे में देखबा लैंड विल बी कूल डाउन लैंड टा जल्दी कूल हे जिवो कूल डाउन हे जिवो सो दैट कोन हबो वाटर बाय दैट टाइम वाटर विल हैव हाई टेम्परेचर as compared to the land कारण वाटर कोन स्पेसिफिक हीट टा हाई जोटा मु कहली के जल्दी ठंडा हबनी कि जल्दी गरम हबनी कहले आकु कोन लागे ग्रेजुअली वार्म अप हबो और ग्रेजुअल कूल डाउन हबो जे लैंड किंतु जल्दी गरम हबो और जल्दी ठंडा भी हो फास्ट हीट अप एंड फास्ट कूल डाउन तो विंटर कोन भी उल्टा हे जे लैंड टा कूल डाउन हे जो वाटर टा गरम थाए सो दैट वाटर विल हैव लो प्रेशर एंड विंड लैंड विल हैव हाई प्रेशर दैट मींस द विंड डायरेक्शन चेंज हे जिवो now wind will move from land to water that will happen in the winter season रे एमती हमको देखा जबो that will cause what the reversal of the wind आमे ताको कहि परबो so एमती हमको sea breeze and land breeze देखा जबो ना बुझा पड़ले नै एटा काको एनीवन sea breeze land breeze जणा पड़िबनी काको भी एनीवन ना कोन कहउछो के काको भी जे डाउट लागुजी कहि दियो सो आम देखा दैट मीन्स आर एडवर्ड हर्ले आंकर जो थियोरी टा अछि दिस थियोरी इज लार्जली ये जो थियोरी को हमें लार्जली कोन को दिस थियोरी इज लार्जली ए सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज रो कांसेप्ट आउ किछि नो लार्जली सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज रो कांसेप्ट ओके मॉनसून हम देखबा द क्लासिकल थियोरी एडवर्ड है ना सो हर्ले a noted astronomer and made a hypothesis that primary cause of the Indian monsoon calculation was differential heating between the land and sea. Differential heating between the land and sea. That means हम जे देखिबा कि से कोन रिसर्च कले कि the differential heating जोटा मु आपन एबे कहली कि specific heat of the land and water is always different. The specific heat कहले कोन ना जो माने जानि न specific heat कहले कोन to raise the 1 degree temperature of the substance. Let's say move 1 liter anili water or 1 kg anili soil anili sand anili
सेमान को सेम टेम्परेचर दवा गैस रे हमें बसई दवा दी पट साइड रे सेम टेम्परेचर दवा है ना सो दैट हमें देखा किए जल्दी गरम होची किए जल्दी गरम होची 1 डिग्री हमको सेल्सियस टू रेज द 1 डिग्री सेल्सियस कहले वाटर 1 डिग्री टेम्परेचर हमें बढ़िया पे चेष्टा करबा आ सैंड रो सेम टेम्परेचर देला बेले हमको देखा गला सैंड टा जल्दी गरम होची वाटर टा टिके लेटर गरम होची तेणु करिक कह जे स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज लेस एंड मोर एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सैंड इज लेस कहले अल्प टेम्परेचर रे जल्दी गरम हो जिबा ओके डन एबे तो बुझा पड़े समस्त को स्पेसिफिक हीट है ना कहले अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ द सब्सटेंस और सेटा पई केते अमाउंट ऑफ हीट मोर रिक्वायर्ड फॉर द वाटर लेस रिक्वायर्ड फॉर द सैंड सो सेट पई कह जे सैंड द स्पेसिफिक हीट इज लो एंड वाटर विल हैव हाई स्पेसिफिक हीट जब यू सर एडमंड हार्ले कथा हम देखिबा तो ये जन एस्ट्रोनॉमर कहते ये तांकर देखिबा आंकर कांसेप्ट कोन जोडा मु तुम कहली आंकर जो कांसेप्ट थिला only that is the extended version of the sea breeze and land breeze the sea breeze और land breeze रा extension or that is the a larger form से कहे कि Indian monsoon is nothing else it's just like the extension form or the extensive form of sea breeze and land breeze nothing to do with other kind of mechanism it didn't explains other form like wind pattern वगैरह किछि डिस्कस करनांती से कहया कथा गोटे लैंड ब्रिज जेमती हमें देखछ लैंड ब्रिज कहले द व्हाट द विंड विल मूव फ्रॉम लैंड टू सी एंड व्हेन आई से सी ब्रिज दैट मींस द विंड विल कम सी टू लैंड तो से कहया कथा तार लार्जर वर्जन ऑफ द सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज इज द मॉनसून लार्जर वर्जन केमिति ना विंटर रे जेमती से कहउची के देखो विंटर रे कोन भी जो हमर एशिया रो लार्ज लैंड मास ना एटा कूल हे जबो ऑब्वियसली कूल हे जबो so that who कहथले टेम्परेचर जदी कमी हो प्रेशर कोन हबो एनीवन if temperature cool downs if temperature decreases what will be happen to the pressure anyone what will happen high pressure obviously pressure would be high तणु करके से कहउची कान ऑपोजिट रिलेशन है ना इनवर्स रिलेशन low the temperature more the pressure and more the temperature low the pressure inverse relation जब हो तो सेति पे से कहले कि जेतबे विंटर आसुची एशिया रो जो लार्ज पार्ट ऑफ लैंड अछि दैट विल डेवलप व्हाट हाई प्रेशर इट डेवलप करिवो दैट मींस आउ सेम टाइम रे वाटर गुडा कोन रहइबो रिलेटिवली वार्म थाए तो वाटर वुड बी रिलेटिवली वार्म ओके एज द वाटर्स आर रिलेटिवली वार्म सेति पे कोन रहइबो ना वाटर टा कोन थाए relatively warm thai as water is relatively warm so that what water over the water that will lead to the low pressure that will cause what low pressure सेतरे कोन रहइबो low pressure रहइबो ओके बुझा पड़े को नहीं तणो करगी जेतु लैंड ऊपर कोन हैला दैट मींस हाई प्रेशर आसी गेला आ वाटर रे लो प्रेशर आसी गेला ओके से कहया तो विंटर रे दैट मींस विंड कोठी कोठी के जो लैंड टू वाटर को ऑब्वियसली द विंड विल मूव फ्रॉम लैंड टू वाटर इजंट इट कैन हाई प्रेशर लो प्रेशर को जो विंड सब बेले so the consequence as a consequence the pressure gradient directed from land to sea कारण हमें देखिए लैंड हाई प्रेशर वाटर is low pressure therefore the outflow of the air from the continental land mass towards the adjacent ocean so that it will bring cold dry air mass towards the low latitude एटा बुझा पड़िबन काको है ना दैट मींस हम के लेट्स से इंडिया एटी मु मैप ड्रा करके देखौची ए होची इंडिया ये लैंड भाबो टाइबेट अछि इंडिया ऊपर टाइबेट एटा कोल्ड हे जबो विंटर टाइम रे तो एठी कोल्ड एयर मास हो दैट मींस हाई प्रेशर वाटर रहबो लो प्रेशर तो विंड एमिति आसीबो विंड कोल्ड एयर मास विल नाउ हमर विंटर जानछो हमर कोन नॉर्थ रो विंड ऐसे शीत हम कोल्ड वेव्स कम्स फ्रॉम द नॉर्दर्न डायरेक्शन इज नॉट इट सो सेति पे कारण हमर ये जो साइबेरिया अछि टाइबेट अछि पूरा कोल्ड हे जाय है ना विंटर सेति पे हमर आ सब बेले हाई प्रेशर लो प्रेशर को विंड आसीबो ओके नाउ द ह्यूज लैंड बैंड ऑफ एशिया जदि हमें देखिबा सो इन समर उल्टा हे जबो समर कोन हे जबो तार उल्टा ऑपोजिट लैंड टा लो प्रेशर हे जबो वाटर टा हाई प्रेशर हे जबो एटा तो बुझा पड़िबो बुझि परछ कोनी तन करी ये तांकर कहबा दैट मींस प्रेशर टा पूरा उल्टा हे जबो समर रे सो मोर एवर द पोलर जोटा के हमें देखा पोल वाट शिफ्ट जेतरो करूची इनटू आईटीसी जेट जेतरो शिफ्ट करूची हां शिफ्ट करियो तारा कोन हे जबो रेनफॉल हबो ओके ताले एबे हम देखबा ई स्लाइड को किछि दरकार नहीं एक है ना एठी के आसी जबा हम डायरेक्ट एठी हम पढितबा बुझितबो तमे ना से कहयो कथा
लेट्स से एटा हमको देखा जो ये विंटर कंडीशन, ये हमर विंटर कंडीशन काना विंटर रे दिस रीजन विल बी कोल्ड, हाई प्रेशर डेवलप करिवो ओवर द लैंड, किंतु एठी कोन करिवो लो प्रेशर डेवलप करिवो समर रे, है ना। सो दैट देखिबा हमें ना केमती मानसून होउची, जेतेबे विंटर फॉर्मेशन पूरा ए रीजन रे कोन जो कोल्ड एयर मास रहइबो, आ ये रीजन रे हमर रहइबो लो प्रेशर। इंडियन ओशन रे लो प्रेशर कना वाटर टा टेंपरेचर हाई थाए, है ना। तो दैट मीन्स विंड विल फ्लो लाइक दिस, विंड विल फ्लो लाइक दिस, तो विंड डायरेक्शन एमती रहबो बिकॉज ऑफ द कोरियलिस फोर्स ताको डिफ्लेक्ट कराइ देबो। एक्चुअली द विंड वाज ट्राइंग टू मूव लाइक दिस, विंड एमती सीधा मूव करे पिन चेष्टा करूथला हाई प्रेशर रो लो प्रेशर को, बिकॉज कोरियलिस फोर्स ताको एमती डिफ्लेक्ट कर देबो। सो द डायरेक्शन वुड बी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हेजबो एंड डायरेक्शन विल चेंज, जोटा कि हम कहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हेजबो। एटा बुझा पड़िबनी काको, है ना। सो दैट द डायरेक्शन वुड बी लाइक दिस, हां कोरियलिस फोर्स ताको कोन करबो डिफ्लेक्ट कर देबो। आ ये विंड जेतल आसुची ध्यान से देखो, कोरियरी फोर्स टा कोन सर? कोरियलिस फोर्स ले अर्थ जो रोटेट करूची निजर एक्सिस चारिपटे जो रोटेशन करूची, रोटेशन करिया द्वारा से जिंस गुडा को डिफ्लेक्ट कराई दिए। जेमते लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स से एटा गोटे मेला रे पिला माने जाइछन्ते बुलिया पे, एमती गोटे सर्कल टा थिबो, सेथरे एमती बुलिबे, दोलीटा थिबो, एमती बुलुची दोलीटा, है ना। जदि लेट्स से ए फ्रेंड एठी बी फ्रेंड बसिची, से ताको गोटे बॉल फिंगिबो, फिंगिला भितर ए दोलीटा बी पॉइंट टा एठी के पळाइस्तो बुलुची, एटा ए तार एठी के आसी जितो, है ना। क्लॉकवाइज एंती हम देखबा, एंटी क्लॉकवाइज जदि बुलुची ता द्वारा कोन हबो, ए को लागिबो मु तो बॉल एठी की फिंगुथिली, है ना। बॉल तो याडे कुआडे जाउची, बी तो एठी अछि, तो एक से तळको बुली जाइची, बी भी बुली आसीची, एमती डिफ्लेक्शन देखा जाय। तेणु अर्थ भी सेमती रोटेट करूची, अर्थ जेहेतु रोटेट करूची, तेणु कोनोसी जिंस आमे जेते फ्रीली फ्लोटिंग करूची ओवर द अर्थ ऊपरे, दैट विल गेट डिफ्लेक्ट, से डिफ्लेक्ट हेजिवो ना। बे बुझा पड़िबनी, हां सर। है ना। केमिति डिफ्लेक्ट हबो ना, राइट को डिफ्लेक्ट हबो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे, और लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हबो साउदर्न हेमिस्फीयर रे। जेमति एठी देखिबे ये विंड एमति सीधा आसे पिन चेष्टा करूथला, बट ये तार राइट कोटा आ राइट होचे, एटा को से डिफ्लेक्ट हेजिवो बिकॉज ऑफ द आमे कहबो रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो इंपैक्ट पड़ो, जो इफेक्ट जाको आई विल से इफेक्ट। तो कोरियलिस फोर्स होचे सिंपल द इफेक्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। एटा को फोर्स कुआ जे इजीली बुझिया पे, बिकॉज एक्चुअली दिस इज नॉट एन फोर्स, ये गोटे इफेक्ट, दिस इज एन इफेक्ट, है ना। आम को इफेक्ट कहू एक्जाक्टली जदि, किंतु बुक रे दिया फोर्स ताकि बुझेबा पे इजीली बुझेबो बोली, एथमे इफेक्ट, बट एक्जाक्टली दिस इज इफेक्ट नॉट फोर्स, ये किछि फोर्स नो, ये गोटे इफेक्ट। तेणु करके ये ताकू डायरेक्शन चेंज कर देबो। सो लेट्स से एठी रहला हमर टाइबेट अछि, टाइबेट रो जो विंड आसुतला हम सीधा आसे अपन चेष्टा करू, ए डिफ्लेक्ट हेजबो, डायरेक्शन एमती हेजबो, सो दैट ए जो विंड जेतेबेले विंटर रे बे ऑफ बंगाल देके आसुची, मॉइस्चर कलेक्ट करी करी आसीबो, आ आसी की पहुंचीबो कोठी मैड्रास पाखरे। तेणु करके मैड्रास रे जेतरा पहुंचीबो, से रेनफॉल स्टार्ट कर देबो। तेणु ये एमती आसुची, इट विल स्ट्राइक दिस पर्टिकुलर पॉइंट, डिफ्लेक्शन होची, आ ये पूरा वाटर बॉडी दे आसिला, मॉइस्चर कलेक्ट करके आसिला, और एठी से मॉइस्चर टाको रेनफॉल कराइबो। तेणु एई रीजन रे हमको विंटर रेनफॉल देखा जिवो। अच्छा ये कारण देखो, एठी भी विंड जाउची, ये तो लैंड ऊपर जाउची, मॉइस्चर मिलिबनी, रेनफॉल हबनी, बुझा पड़िबो। तेणु एई रीजन रे हमको बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल जेहेतु अछि, सेति पे हमको एठी मॉइस्चर मिलि गेला पर रेनफॉल हबो। तो विंटर रेनफॉल हबार कजेस होची ये। तार अपोजिट जदि हम देखिबा, समर रे कोन हबो ना, winds are coming from this direction all around, they are getting moisture and they will cause the rainfall over this part of India for rainfall करिवो। जदि हम देखिबा को सीजन रे ना, इट वुड बी समर सीजन रे, है ना। समर सीजन रे उल्टा हे जिवो, एटा हमर लो प्रेशर डेवलप करिवो एंड दिस साइड वुड बी हाई प्रेशर, कारण सदर्न हेमिस्फीयर विंटर चलथे, हमर समर तांकर विंटर, तांकर हाई प्रेशर, हमर लो प्रेशर, तो विंड कोठ जिवो हाई रो लो को, किंतु गला बेले से डिफ्लेक्ट हे जिवो तार डायरेक्शन। तेणु करके हमर समर मानसून बिकॉज ऑफ द सीजन चेंज हेगले समर मानसून हुए। तेणु ये जो हमर आईटीसी जेड अछि, आईटीसी जेड तुम कहले, आईटीसी जेड कहले मीटिंग पॉइंट ऑफ टू विंड, ये गोटे विंड आसुची, ये गोटे विंड आसुची, तो दीटा विंड रो मीटिंग पॉइंट को होजे आईटीसी जेड। सो दैट आम कहि पारे द प्रेशर ओवर द एडजेसेंट ओशन बीइंग हाई, जेतरा हाई हिजो हमर समर सीजन रे कहूचे। समर सीजन जोटा तुम देखि परिबो, एटा होचे हमर समर सीजन। समर सीजन रे नियर बाय रीजन रे हम देखबा कोन थाय हाई थिबो, आ हमर लैंड ऊपर लो प्रेशर थिबो, ऑब्वियसली विंड फ्लो करिवो, देयरफॉर फ्रॉम हाई ओशन रे हाई अछि, लैंड रे लो अछि, तो लैंड को आसीबो, दैट विल अट्रैक्ट रेन,
so air आसबो that will cause rain. तेणु हार्ले को आम जी देखा हार्ले कनसेप्ट बेस किसी ना सिंपल द रिवर्सल ऑफ विंड से कहया कथा कि इंडिया को जी तुम देखो दिस पार्ट ऑफ इंडिया है ना कि समर रे कौन होची इंडिया रे चारिपटे तीन पटे वाटर अच्छी दिस साइड जेहेतु थ्री साइड ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन तेणु करके आम कहबा ना समर रे इंडिया रे जो लो प्रेशर होची लैंड रे हाई प्रेशर हियर वुड बी हाई प्रेशर हियर वुड बी हाई प्रेशर चारि आडो विंड कौन आसीबो इंडिया को आसीबो आ से विंड रे मॉइस्चर थाए रेनफॉल कराए ये होची हार्ले रे कांसेप्ट समर मॉनसून रो कांसेप्ट ओके तो ताको अब देखबा समर मॉनसून रो कांसेप्ट से कहया कथा जेहेतु इंडिया रो पोजिशन टा बा इंडिया लोकेशन टा एमिति अछि जोटा कि मॉनसून को मॉनसून फॉर्मेशन रे हेल्प करूची बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडिया just believe or had it be like here or if India were here what could happen later on because we don't have any water body surrounding region in this part of the world तेणु करके जेहेतु आमर कौन होची इंडियन ओशन टा आमर तीन पटे घेरिक रही जो लास्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुलर पार्ट दैट इज व्हाई हमको कौन देखा जाए रेनफॉल आम एक्सपीरियंस करुच्छे जोटा कि रिवर्सल ऑफ द विंड पैटर्न रे रेनफॉल को एक्सपीरियंस करुच्छे तापर में रिसेंट ये तुम ओल्ड थ्योरी जोटा कि हार्लेंकर ओल्ड थ्योरी बा क्लासिकल थ्योरी कह जाए कॉन्सेप्ट तापर आम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सब काली पढ़ा जमती रही हिमालयन रोल कौन मॉनसून फॉर्मेशन करिबारे जेट स्ट्रीम रो रोल कौन मॉनसून फॉर्मेशन करे बहुत सारा देखा है ना देन आम ट्रोपोपोज बा ट्रोपोस्फियर रोल एलिनो लालिना कॉन्सेप्ट भी आम देखा इंडियन ओशन सो देखा आम वाकर सेल कौन ताकू देखा इंडियन ओशन डाइपोल कौन ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाई टाइम लगे दी तीन क्लास लगे मॉनसून सारे तो आज जोटा थिला बहुत इजी थिला एटा हार्डले कॉन्सेप्ट एथरे किछि भी नहीं ओनली जस्ट प्रेशर डिफरेंस एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द रेनफॉल बाकी हमें आगु सर से जो आईटीसी जेड रे टिके कांसेप्ट है टिके उतरे आईटीसी जेड किछि दरकार नहीं हार्डले रे हला एक्चुअली हार्डले के भी आईटीसी जेड कथा कहि ना सेतबे मु कहूनी बुझ पड़छ खाली से कहितले नहले तो मु बुझेई थांती एक्चुअली हार्डले आईटीसी जेड कथा किछि कहनी हां जदी तुम आईटीसी जेड टा खाली जाने पे चाहछो देन आई विल गो थ्रू दैट है ना आगे सर आगे ठीक है आईटीसी जेड टा मु कहि दोछि आईटीसी जेड जानिया पूर्व हमको विंड पैटर्न अर्थ जानिया पड़िबो विंड पैटर्न जेमति कि एमति विंड थे हमरो दैट्स दिस वुड बी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ ये रहबो तमरो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एमति दे आर मीटिंग ए माने मीट करंती इक्वेटर रे है ना एपटो गोटे विंड आसुची एमिति एपटो गोटे विंड आसुची दे आर मीटिंग ओवर द इक्वेटर तो ये मीटिंग पॉइंट को कहै छै आईटीसी जेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स आई फॉर इंटर टी फॉर ट्रॉपिकल सी फॉर कन्वर्जेंस जेड फॉर जोन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स कहले ये कौन ट्रॉपिकल एरिया ये भी ट्रॉपिकल एरिया ये होची ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये होची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ताले आर मझी एरियाटा कौन एटा दिस इज द इंटर मिडिल पार्ट बुझ पड़छ ना ताले आईटीसी जेटर मीनिंग कौन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स कहले एठू जो विंड आसुची एठू भी विंड जाउची एंड दे आर मीटिंग इन दिस पर्टिकुलर जोन तेणु एई जोन को कह जाए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ना भी बुझा पड़िबनी है ना तो दीटा विंड मीटिंग पॉइंट को कह जाए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन तो ये आईटीसी जेड निजे मूव करे ये जो देखुछ तमरा मीटिंग पॉइंट आईटीसी जेड रो मीटिंग पॉइंट है एठू बट से माइग्रेट करे केतेबेले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को माइग्रेट करि जिवो केतेबेले साउदर्न हेमिस्फीयर को माइग्रेट करे जेमति एठी लिखा है देखो एठी की माइग्रेट करि आसी एठी की माइग्रेट करूची अप टू 30 डिग्री जाय माइग्रेट करे है ना जेतेबेले सन जोठी थिबो लेट्स से सन जति ओवर द इक्वेटर अछि तले आईटीसी जेड 80 रहबो सन जति 20 डिग्री लैटिट्यूड अछि आईटीसी जेड 80 रहबो कहले पूरा सन को फॉलो करे ए माइग्रेट करे ए स्टैटिक नो इट विल माइग्रेट हियर एंड देयर तेणु करके तार माइग्रेशन रे विंड भी माइग्रेट करिवो इफ आईटीसी जेड इज माइग्रेटिंग दैट विल लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ द विंड आल्सो माइग्रेशन ऑफ द विंड भी हबो ना बुझा पड़िबनी बुझ पड़छनी तेणु करके ताहेटा रेनफॉल सेटा आगु को पढ़ाई देबी तमर जो आईटीसी जेड अछि जो कॉज अछि मॉनसून रे और आगु को मॉनसून रो जो कॉज अछि सेतर पढ़िबा आगु को